Indian Indigenous System by Dr. Ashvini Kumar Rajpal. He is the Director of International Foundation in Vedic Science Canada. We also with have Mrs. Shobha Brahmpatni sir की हम उनका भी स्वागत करते हैं and we also have Mrs. Soma. So first of all I invite Ashwini Kumar Rajpal stage please come on the dais से एक बार जोरदार तालियों से हम सबका स्वागत करेंगे कनाडा से यहाँ आए हैं स्पेशल डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य जी और महर्षि दयानंद जी और करेंगे इससे I invite Mrs. Shobha on the stage. Please come on the stage. And Mrs. Somvati, I also invite you to please come on the stage. And Dr. Prakash, retired principal, please come on the stage. महर्षि दयानंद सरस्वती के दोस्तों की जयंती पर ये कार्यक्रम मैडम Smita, invite please come on the stage. This is from Sanskrit department and we message. तो कोई भी कार्यक्रम जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे वेदों में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं तो मंत्र चैंटिंग से शुरुआत करना चाहिए इस कार्यक्रम की तो मैं मैडम शोभा को इनवाइट कर मंच पर आए और वैदिक मंत्रों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नमस्ते। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे उसके बाद गायत्री शुरू करेंगे। ओ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्हितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि वेदान् युयोधस्वज्जुराणि भूमिशान्तेन उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। धन्यवाद। अब मैं बाकी आए हुए अतिथि स्वागत सत्कार करें जो आपकी भारतीय परंपरा है प्रकाश आर्य से वो इसमें सहयोग दें। तो सबसे पहले मिस्टर कुमार राजपाल उनको शाल उड़ाकर खजान सिंह जी श्री खजान सिंह यहाँ से खींचो, यहाँ सामने से। धन्यवाद सर। अब मैं आपको इनवाइट
So Madam Sunita Saini जी, डॉक्टर सुनीता सैनी शाल उठाकर हमारी चीफ गेस्ट तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें। और मैडम मोदी जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर आए और डॉक्टर सुषमा नारायण मंच पर आकर मैडम का स्वागत करें। धन्यवाद मैम। तो आज अब मैं डॉक्टर को करता हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। डॉक्टर श्री भगवान है कि मंच पर आए और पटका पहनाकर आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अश्विनी कुमार राजपाल का स्वागत करें। दयानंद आर्य जी की मंच पर आए। दयानंद आर्य जी। सुरेश कुमार हमारे में लिखा है अतिथि देवो भव। सुरेश कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ आए और हमारे मुख्य अतिथि हमारे कुछ साथी आए हुए हैं। खेड़ा खेड़ा पूर्ण आर्य समाज हमारे रोहतक के आसपास खेड़ी आसरा का, वहाँ से हमारे जो आए हुए हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो योगदान रहा है समाज में, संस्कृति में, भारत के पुनर्जागरण में, वो हम नहीं भुला सकते। उन्हीं के उधर से भी सबका आएगा, उधर से ये भी आ जाओ कृपया अपना स्थान। तो सेलिब्रेटिंग 100 स्वामी दयानंद जिनका योगदान दयानंद गुजरात में पैदा हुए, लेकिन हरियाणा और पंजाब में काम किए, अद्भुत रहा। उस समय भारतीय समाज काफी अंधविश्वासों की जाल में टिका हुआ था। अपने वैदिक ज्ञान के द्वारा अंधविश्वासों की जड़ों को काटना और भारतीय समाज को वैदिक ज्ञान की तरफ लेके जाना उनका योगदान रहा। और उसी सिलसिले में वैदिक कैलेंडर और वैदिक कैलकुलेशन का जो महत्व है वो हम भुलाई नहीं बोल सकते। These things are very important as so many universities of Western countries doing research on this Vedic science, Vedic treasures which we have. हम अपनी संस्कृति और वैदिक साहित्य को भूलते जा रहे हैं, लेकिन संसार की दूसरे विश्वविद्यालय बहुत गहन रिसर्च की चीजों पर चल रहा है। और गीता में कहा है ज्ञानेन सदृशः मित्रम ये विद्यते। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले कोई वस्तु नहीं है। उसी ज्ञान की आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रकाश ने आज इनकी लाइक किया है, वो महान विभूति मेरे बीच में
रहे हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राजपाल। जोरदार तालियों करेंगे। और मैं इनवाइट करूंगा चेयरपर्सन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के श्री रवि प्रकाश आर्य बताएं और विधिवत रूप से आज की तिथि का स्वागत। आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अश्विनी राजपाल, उनकी धर्मपत्नी शोभा जी और कनाडा से हमारे मित्र पधारी सुमति दास, इस मंच पर संस्कृत की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता जी एवं हमारे जो एक अध्यक्ष के विराजमान और वयोवृद्ध विद्यावृत्त प्रोफेसर सिंह जी, आप राजकीय विद्यालय झज्जर के प्रिंसिपल भी रहे हैं और इंग्लिश अध्यापक रहे हैं और संस्कृत प्रहित, इसलिए अद्भुत है तो मैंने किया, क्योंकि हमारे जो मुख्य वक्ता है वो अंग्रेजी में करेंगे, तो आप अंग्रेजी के भी रहे हैं और आप संस्कृत में भी प्रहेलिकाएं लिखते हैं, पहेलियां संस्कृत लिखते हैं, संस्कृत की रुचि है। और इसी उपस्थित हमारे मित्र प्रोफेसर श्री भगवान जी संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं, और यहीं पर उपस्थित प्रोफेसर सुषमा नाराज अभी संस्कृत विभाग के हैं। सब लोग बहुत यशस्वी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और संस्कृत के प्रति निष्ठावान हैं और आर्य समाज से महर्षि दयानंद से प्रभावित हैं। इसी सभागार में उपस्थित दयानंद आर्य, आप एडवोकेट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, और इसी सभागार में अश्विनी कुमार जी हैं, आप जूलॉजिस्ट हैं, जेनेटिक साइंस काम किया है, आप कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं। और खेड़ी आसरा से उपस्थित जो 100% गांव में आर्य समाज के लोग हैं, पूरा गांव आर्य समाज यहाँ पर उपस्थित, खेड़ी आसरा से उपस्थित भी, वहाँ के सरपंच भी यहाँ उपस्थित हैं और अन्य जो मित्र उपस्थित हैं, सबका भी स्वागत करता हूँ। और आर्य समाज के विद्वान एक हमारे मित्र से आए हैं और संस्कृत विभाग के जितने भी छात्र छात्राएं और इस विश्वविद्यालय से बाहर के जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए। जैसा कि हम जानते हैं, जो भारतीय ज्ञान की परंपरा है वो वेदों से होती है और वैदिक काल वेद का सबसे पुरातन ग्रंथ है। वेद से पुराना ग्रंथ नहीं है, संस्कृत से पुरानी दुनिया की कोई भाषा नहीं है और वेद से पुराना कोई साहित्य नहीं है। यदि दुनिया में किसी की प्राचीनता को कहते हैं तो वह उसका उल्लेख वेद में प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान की प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। और ये जो धरोहर है हमें प्रदान की महर्षि दयानंद ने, 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद का उद्भव इस राष्ट्र में होता है और महर्षि दयानंद ने एक नारा लगाया उस समय जब भारत गुलाम था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और सारे भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जब पश्चिम की ओर देखता था और बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर देखते थे, पश्चिम से ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान का उदय होगा और वह जो ज्ञान की आभा पश्चिम से चल के आएगी पूरे भारत प्रकाशित। परंतु उस दौरान में हम देखते हैं काशी की नगरी में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ स्वामी दयानंद का काशी के पंडितों के साथ। सारे काशी के पंडित अंग्रेजों के समक्ष दंडवत करते थे, उनको प्रणाम करते थे और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग था, बंगाल का, महाराष्ट्र का, पूरे भारत का, सब अंग्रेजों को शाश्वत दंडवत प्रणाम करते थे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। और आज भी इस देश के अंदर
आजादी के 70-75 वर्ष के बाद भी हमें मिलेंगे, क्योंकि ये कहते थे कि अब यहाँ से आज से तो अंग्रेजों का शासन भी अच्छा है। मतलब अंग्रेजों के प्रशंसक आज भी इस देश में विद्यमान है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो उस समय के लोग बैरिस्टर बनकर के आए, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़े, पाश्चात्य जगत से पढ़ के आए, तो सब अंग्रेजों का वाह-वाहकार करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु उस समय जो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रमुख महर्षि दयानंद केवल भारतीय शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, उन्होंने किसी अन्य देश से शिक्षा प्राप्त नहीं की, कोई गुरुकुल की भी शिक्षा प्राप्त नहीं की, स्वतः पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन किया और अंततः जो प्रज्ञा चक्षु के गुरु थे स्वामी दयानंद, उनसे शिक्षा प्राप्त की। तो शुद्ध रूप से भारतीय। एक पश्चिम की इतिहासकार है एडोली कडौरी, उसने एक पुस्तक लिखी है नेशनलिज्म। वह लिखती है अपनी पुस्तक में कि ये जो दयानंद स्वामी है, ही इज द मोस्ट ऑथेंटिकली इंडियन ऑफ इंडियंस। कहती है कि इससे बड़ा शुद्ध भारतीय व्यक्ति इस भारतवर्ष में नहीं मिल सकता है, इतना ऑथेंटिक भारतीय है कि इसी की शिक्षा दीक्षा इसका विचार सब भारतीय है। जब सब लोग सोच रहे थे कि पश्चिम से ज्ञान का प्रकाश होगा, उदय होगा, उस समय महर्षि दयानंद ने कहा बैक टू द वेदास, कि वेदों की ओर वापस लौटो। और उस समय पश्चिम का जगत मानता था कि जो प्राचीन शिक्षा है वह हमारे लिए उपाधेय है, उसमें ज्ञान और विज्ञान की बात ही नहीं है। परंतु महर्षि दयानंद ने उस समय बताया कि ये जो वेद है, ये पूरे ज्ञान और विज्ञान का स्रोत है, ज्ञान की धारा वेदों से ही निश्चित होती है। और उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति है वो वेद पर आधारित है और हम सब वेद के ज्ञान के अनुयायी हैं। और उन्होंने कहा भारत के उदय का रास्ता, भारत के अभ्युदय का रास्ता पश्चिम से होकर नहीं निकलता है, अपितु वेदों से निकलता है। भारत की प्रगति का मार्ग वेदों से ही होकर निकलता है। ऐसा व्यक्ति आज हम 200 वर्ष मना रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन में ये 200वीं शताब्दी, ये जो दूसरी शताब्दी ये हमारे जीवन में आ रही है। और पता नहीं आगे जो पीढ़ियां आएंगी जिसमें क्या होगा, परंतु ये 100वीं शताब्दी 200वीं शताब्दी ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं अपने आप को बड़ा कृतज्ञ मानता हूँ, धन्य मानता हूँ कि इस समय मैं भी दयानंद सरस्वती है इसका चेयरपर्सन हूँ और इस चेयर के माध्यम से मैं अनेक प्रकार के व्याख्यान कराता रहता हूँ। आज मेरे मित्र जो अश्विनी राजपाल है, वैदिक कैलेंडर पे बहुत काम किया है। देखिए आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में कोई कैलेंडर बनाना नहीं जानता था। पश्चिम में सबसे पहले जूलियन कैलेंडर बनाया गया ईसा पूर्व 2 शताब्दी पहले। उस जूलियन कैलेंडर में भी बहुत ज्यादा खामियां थी और उसके बाद 1583 में उसमें सुधार किया गया और एक पोप ग्रिगोरियन ने उसमें सुधार करके उस कैलेंडर को शुद्ध किया। और फिर उससे क्या हुआ, कैसे उसने उसका शुद्धिकरण किया, पश्चिम के लोग ये नहीं जानते थे कि साल में 365 सही 1/4 वर्ष होते हैं। तो उनको जो चौथाई दिन था उसका हिसाब नहीं था। तो ग्रिगोरी ने बताया कि ये जो चौथाई दिन है इसका भी एक हिसाब है, तो हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, उसमें एक लीप के दिन का प्रस्ताव रखा। और ये जो 26 पहले 28 की होती थी, उसने कहा इसको 29 का बनाए हर 4 साल में, तो ये जो है कैलेंडर एडजस्ट हो जाएगा। और 1583 में क्या हुआ, 4 अक्टूबर का समय था, क्योंकि पूरा जो कैलेंडर था 11 दिन पीछे हो गया था, तो उसने 4 अक्टूबर को 15 अक्टूबर करके और ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रारंभ किया। और आपको आश्चर्य होगा, पूरा यूरोप के अंदर बहुत बड़ा एक इनकलाब आया। लोगों ने कहा कि आपने हमारे जीवन के 11 दिन कैसे समाप्त कर दिए, और ये हमारे को आपने क्या किया कि हमारे जीवन के 11 दिन हमारे जीवन के इतिहास से निकाल दिए, सीधा ही 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का समय आ गया।
तो वहां पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ यूरोप में और वो लोग समझाते रहे। तो हम समझ सकते हैं 1582 से पहले यूरोप के लोगों के पास कैलेंडर का कोई इतिहास नहीं था। और आप समझ सकते हैं कि 1582 से पहले यूरोप का जो इतिहास लिखा गया उसकी डेटिंग भी ठीक नहीं, क्योंकि उसमें अगर 29 फरवरी में कोई इतिहास की घटना हुई थी उसकी ठीक डेटिंग बन ही नहीं सकती थी। और भारतवर्ष के अंदर वैदिक काल से प्रारंभ करके आज तक समय की बिल्कुल समीचीन और सटीक गणना की जाती है। हम देखते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक पाठ करते हैं, अद्य ब्रह्मणोर द्वितीय प्रारंभे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे, इस प्रकार से घूमते हैं। और ये जो संकल्प पाठ है इसमें सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जितना समय हुआ है और जिस स्थान पर कोई अनुष्ठान हो रहा है उसका पूरा वर्णन हम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी संकल्प पाठ की परंपरा है और ये पश्चिम भारत से प्रारंभ होती है और उत्तर भारत तक यथावत चलती है। इसमें एक दिन एक मुहूर्त का भी अंतर नहीं है, केवल स्थान का अंतर होता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे बैठने वाले लोग अलग अलग प्रकार का स्थानों पे रहने वाले लोग अलग अलग स्थान का उल्लेख करते हैं। तो इस देश के अंदर जिस पश्चिम के जगत को कहा गया कि यहाँ पर विज्ञान बहुत उन्नत है, उनको 1582 तक न तो जीरो का ज्ञान था और न उनके पास कैलेंडर था। कितनी बड़े दुख की बात है। और भारत के अंदर वैदिक काल से लेकर के आज तक हमें सही संख्याओं का और कैलेंडर का समीचीन ज्ञान है। दयानंद ने इस बात को अपना जो ग्रंथ है ऋग्वेद आदि भाषा में भी इंगित किया। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं, जो मेरे मित्र हैं तो वैदिक कैलेंडर पे इन्होंने बहुत काम किया है, ये मेरे साथ काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं जहां मैं गलती करता हूं, अब ऐसी स्थिति है, इन्होंने मुझसे सीखा परंतु अब ऐसी स्थिति है, ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका शिष्य हूँ। मैं जब कुछ लिखता हूँ तो इनको भेजता हूँ और उसमें करीब ढेर सारी 40-50 गलतियां अश्विनी जी निकाल कर मुझे भेजते हैं, क्योंकि इनका इतना अब जो दृष्टिकोण है वैदिक कैलेंडर की इतनी अच्छी पकड़ है कि मेरी पकड़ नहीं है। मैं अनेक विषयों पे काम करता हूँ और ये वैदिक कैलेंडर के पारंगत विद्वान इसमें है। तो मैं अपने अश्विनी भाई को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने ये पावर पॉइंट के माध्यम से आपको वैदिक कैलेंडर के बारे में अवगत कराएंगे। अश्विनी भाई। धन्यवाद सर। Please come on the stage. नीचे बैठ जाते हैं। हाँ बैठ सकते हैं। इसको देखते हैं। Okay. 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 Dr. Ravi Prakash, Arya, Dr. Kajal Singh, esteemed scholars, Bhai Janardan, Bhai Urbano, stay. Today, my talk will be in Angrezi, Dr. Ravi Prakash mentioned, but most of the points that I will present today are from different Vedic sources, mainly the Jyotisha Granthas, but I've also added some history and some mathematics and things like that to help. Hopefully, you understand better. Make your face. Oh, okay. As you can see on the screen, the Vedic calendar, I'll start with the Vedic calendar,
It's also known as the North Indian calendar or Panchang. Next. Now, most of you are familiar with this type of calendar. It's it's called the Gregorian calendar, or the Christian calendar, or the Western calendar. And I'll next. How does the Vedic calendar differ from the Gregorian calendar? So, the Vedic calendar is science-based, based on the science of astronomy, whereas the Gregorian calendar is a church-based calendar. It was started by the Roman Catholic Church. The knowledge in the calendar emanated from the Vedas, whereas with the Gregorian calendar, it was introduced in 1582 by Pope Gregory. Now, with the Vedic calendar in Vedic times, the day started at sunrise, whereas these days the day starts at midnight. And midnight, there is no scientific reason behind it. Whereas when the day starts at sunrise is part of the science of the universe. The Vedic calendar is both lunar and solar based. So it's called a lunisolar calendar, whereas the Gregorian calendar is mainly solar based. But it's solar based in namesake only. It does not start from any sun sign. You're familiar with the sun sign. It's used mainly in astrology for the different rashis. The Vedic calendar started from the time humans appeared on Earth, 1.96 billion years ago. Whereas this Gregorian calendar, it started 439 years ago. It was introduced in 1582 by Gregory. And it's interesting that England did not adopt it until 1752, almost 200 years later. With the Vedic calendar, the years are computed from the beginning of Dashinayan, which is the summer solstice for those of us in the northern hemisphere. That's around June the 21st. Whereas the Gregorian calendar starts on the new year starts on January 1st. Again, there's no science behind January 1st. And some of you who have read about calendars, you will find that at one point in time, prior to the Gregorian calendar, there was no January, there was no February. The year started in March. Now, what are some of the unique features of the Vedic calendar? It's not based on any particular person, place, or event. The present Gregorian calendar is based on a religious person, whereas calendars should be based on the movement of the stars and the planet. It doesn't speak of any particular race, religion, or region. So it's universal, it's secular. It can be used by any country, by any people, by any race, by any culture. And as I said before, it's based on the movements of the heavenly bodies, like the planets, the stars, and our galaxy. Next. Now, what are some of the benefits of the Vedic calendar? Obviously, it's keeping track of time and dates. But for a lot of us who do yajnas, it assists us with the sankalp. And by the way, the sankalp was started as an oral tradition
And it still uses an oral tradition to tell date and time you're performing that particular yajna. Another benefit of the calendar, it helps yajmans when they're doing any puja or anything with the Ritwik Bharat. That's when you welcome the Purohit into your home. You're supposed to say a mantra to welcome the Pandit and offer him a seat, and you incorporate and help into that. Another benefit of the calendar is it aids in the naming of newborns or babies. Yeah. And that depends on the on the moon sign of the birth. The Vedic calendar is not to tell you the exact time and dates of the parvas, the festivals. When you use the Gregorian calendar, sometimes it causes misunderstanding as to the exact dates. And I'll explain a little bit more about that later. Another benefit is record events in our itihas. And itihas refers to as it happens. It's not just history. You're not just looking back at history. It records events and time as you move along. It helps also with determining the exact age of creation. When we talk about creation, there are three types of creation. There is a universal creation, there's a biological creation, and there's a human creation. And there's a little bit of also confusion with the biological and human creation, but they happen at different times. And this Vedic calendar is based strictly on the science of astronomy. The Sanskrit word for it is Jyotisha. And some Vedic principles are still being used by other systems. For example, the word hour, HOUR, and 7 days of the week. These are all nomenclatures from Vedas, and these are two concrete proofs that astronomy originated in Bharat. Thanks. Now, what timings do? Oh, an example of a sample that you can use for that we have done back on 2020, 2019. So, but if you notice, I've underlined certain words and are the variable. You can use this as a master. Next. And again, this is an example of the Ritwik Varadam. When you welcome a hit to your home, you do a Havan or a puja or whatever function it is. Okay, this is very important. Timing to be considered for determination of Indian festivals for the lunar calendar. There are four things you have to consider. The first one is the lunar month. The second is the tithi or the lunar day. The third is the end time of the tithi. And fourth, the last is when the sunrise is prior to the end time of the tithi. The reason this is important is that festivals, when celebrated on a day in India, does not necessarily mean it's the same day in Canada or America. It depends on the end time of the tithi and when sunrise is that tithi. Next. Now let's
let's look at some of the Indian festivals and anniversaries. Now, with with the Vedic calendar, the date will always remain the same as for the month and the day. It only varies on the Gregorian calendar. So let's look at Maharishi Dayananda Jayanti, for example. It will always fall on Algana Krishna Paksh. That's the dark half and the 10th day of that month. In 2024, the Gregorian equivalent will be Tuesday, March 5th. Okay? So the Gregorian calendar will be variable. It will change from year to year, but it will never change on the Vedic calendar. The same with Mahashivratri and Dayananda Utsav. It will always fall on Falguna Shapaksh, 14th day. And in next year, 2024, that will be March 9th. Next. This is a summary of the major holidays or festivals. We have a New Year. The Lunar New Year falls on Chitra, Shukla Paksh, the first year, and next year it will be Tuesday, April 9th. Arya Samaj Foundation Day will be on April 30th. Ram Navami, Raksha Bandhan, Krishna, Janamashmi, Pawali, all are on there. Next. Do you think you can? Okay, this is a page from our calendar that we produce every year. This is the 2024 version. Unfortunately, it is a little bit hard to read, but you can see the first column there is the Gregorian date. When we have the weekday, we have the solar month and the day. We have the sunrise, which is very important. Sunrise. We have the and then we have the lunar month day, and then the tithi. Okay. Next. And this is the second page of that from that calendar. It has the moon sign, the constellation, or the nakshatra, and then it has the festivals and events, a column for all those at the end there. Next. Okay. Now, this is a illustration of how the Earth orbits the sun, and it explains why we have certain seasons at different times of the year. So right now we are in November. So we are we're over there at the far right. The Earth is orbiting the sun, and it tells you the latitude and things like that. And it also helps to determine why in certain times of the year there's more sunlight in the north and there's less sunlight in the south, and vice versa. Okay, next. Oh, one thing I forgot, if you can just go back to this. Our rishis, when they studied and observed the planets and the movements and things like that, they were able to precisely tell that the Earth's rotation around the axis, that means every 24 hours, it travels 1,600 kilometers per hour. And when it orbits the sun, when it goes around the sun,
it travels at a speed of 100,000 kilometers an hour. And Western scientists have verified this information. Next. Next. Now, I'm in this slide. I'm using the word apparent because a lot of people say mistakenly the sun moves around the earth. It's the opposite way. It's the earth that moves around the sun, and we see the sun at different points because of the earth's movement. So we'll start with Uttarayan next, and that starts from the winter solstice, usually on December 21st. The sun is seen more in the southern hemisphere, like places like Australia and New Zealand and those places. And when we have that 10 a.m., it is seen from around June 21st when we have the summer solstice. That's when we have more daylight in the north. In Canada and places in that area, in that region, we see this more because the days are longer. You have daylight sometimes up to 10 o'clock at night there because of the orbit of the Earth around the sun. Next. Now, let's talk a bit about the importance of time, kala, in Sanskrit. It gives us a sense of sequence of time regarding past, present, future, and it gives us a chronology. Okay. Next. Time is available to all, and we should utilize our allotment effectively. And time does not subscribe to irrational notions like world coming to an end soon. I don't know if some of you have read in the news a few years ago. They were talking. Some pastor was talking about the earth or the world coming to an end soon. There is nothing like that in Vedic philosophy, and it gives us a better understanding of ourselves and purpose. And Rishi Dayanand had rightly said, time is eternal. Next. Now, let's look at measurement of time according to Vedic teachings. The smallest unit of time is Truti. And look at the measurement there. It is 33,750th part of a second. The fourth smallest is known as Asu or Prana, which is equivalent to 4 seconds. The longest unit is, let's look at Ahoratra, which is the word for day and night, or is equivalent to 24 hours, or that's the time the Earth rotates around its axis. And Ahoratra comes from two Sanskrit words, aha meaning the lighted part, and ratri meaning the dark part. It's interesting that this later developed into the Hora system, which was the degenerated form of Ahoratra. And the word hour, H-O-U-R,
evolved from Sanskrit term hora. Week, as I said, the week, 7 days named after 7 planets: Sun, Mercury, Venus, Earth, Moon, Mars, Jupiter, and Saturn. Now, it's interesting that in Vedas, this is described as the 7 lokas. The Vedic seers remember these 7 lokas during their daily prayers as Om Bhu, Om Bhuva, Om Swa, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satya. So that's why I said that the world is still using this Vedic uh, terminology today, 7 days a week. The month is equal to 30 lunar days or 30.44 solar days. Okay, and those are synchronized. I'll explain the synchronization a little bit later. The solar year is 365.25 civil days. That's how long the Earth takes to orbit around the sun. And the Brahma-Yu Mahakal is the longest possible. It's 311.04 trillion solar years. So now we look at Masa, or month. In Rig Veda, it states that moon is the maker of the month. It's based on moon's revolution around the Earth. It's approximately 29.5 days. However, orbit is irregular, therefore some days or tithis are long and some are short. The names of the lunar months are determined by the nakshatra at the end of Purnima of the said month. Next. Now, each masa month is divided into the bright fortnight or the dark fortnight. The bright fortnight is known as Shukla Paksh, and the dark fortnight is known as Krishna Paksh, and they're divided into 15 days each. Shukla Paksh is when the moon waxes, and Krishna Paksh is when the moon wanes. Shukla Paksh ends with Purnima or full moon, and that's when the sun and moon are 180 degrees apart. And Krishna Paksh ends in Amavasya, which is the new moon. Next. This slides give you next. Next. This go back. Yeah. This slides gives you a presentation of the moon's orbit around Earth and the different times, whether it's Shukla Paksh or Krishna Paksh, and when at full moon itself, it's Purnima and New Amavasya. Next. These are the months of the lunar year. We have the 12 months of Chaitra, Vaishakha, Jyeshta, Ashada, Shravana, Bhadrapada, Ashvina, Kartika, Margashirsha, Pausa, Magha, Falguna. Next. Now, earlier I mentioned about the difference between the lunar month and the solar month.
After 32 solar months and 15 days, one extra lunar month is added to the calendar. It's called Adhika Masa. This is because you have to synchronize the calendar. Uh, this is similar to the Gregorian calendar, where every 4 years we add one day in February to make it a lunar year. So next year we will have February 29th, and that's when we synchronize that. So this is a similar philosophy, but this has been in vogue from Vedic times. Okay, next. Now, next. Oh. Now, how do we measure length of time in a Vedic system? We have a system called the yugas, or the yugas are when we have conjunction of the planets, and this was observed and recorded and studied by our rishis from time immemorial. So what they have done is divided the yuga into Yuga or Trita Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. And you can see the number of years for each up there. And the total to 4,320,000 years, which is a Mahayuga. Currently, we are in 5,126 year of Kali Yuga. We are in the 28th Mahayuga. 27 have passed. So if you times 4,320 by 27 and add the Satya Yuga, Trita Yuga, Dwapar Yuga, and 5126, it'll give you the correct number of years. And present Kali Yuga started on Friday, September 5th, 3102 BC, when all the planets were housed in one zodiac sign. And this time was supported by two French astronomers, Sylvain Bailly and Mr. Leverrier. They did the calculations that we used here in India. They verified that it was correct. And one of the important things is Rig Veda was compiled with 432,000 syllables to represent the very astronomical basis of the Yuga system. By the way, we had a conjunction of Jupiter and Saturn as recently as December 21st, 2020. So, and these are not the only yugas. There are smaller yuga systems. There's a 5-year yuga system, there's a 12-year yuga system, and there's a 60-year yuga system. And the 12-year yuga system is used for the celebration of the what's that festival? Kumbh Mela. That's this. It uses this same system for that. Now, let's look at the link. Some of you may have heard of Kalpa. Kalpa is 1 day of Brahma. And what's 1 day of Brahma? 1 day of Brahma is the revolution of our galaxy. Western science has named it the Milky Way. So that's the time it takes for the Milky Way, our galaxy, or if you want to call it the Parameshti Mandal, to orbit the supergalactic or the Swayambhuva Mandal. Okay, and how do we calculate that? So we have one Ayuga, 4.32 million years, and we are currently in 28. Then we have another system called Manvantara,
it's equal to 71 Mahayuga plus 1 twilight transition. A twilight or transition, as it says at the bottom, is 1.728 billion years. And then we have the Kalpa, which is equal to 14 Manvantaras plus 15 twilights. So when you math, you come up with this number. Next. We get 4.2 billion years. Next. Now, go back to one. Now, if you look at the top, it just says 1 day of Brahma. So when you're trying to calculate the time of the creation of the universe, you have to add the night of Brahma. So 1 day of Brahma is the same as one night of Brahma. So 1 day, which is of Brahma, which is day and night, will be twice of this number. So it will be 8.64 billion years. Next. Now let's look at a graphical illustration of where we are in this present creation cycle. This star represents where we are, and we are in this Manvantar that 7 at the bottom means Manvantar 7. So that's where we are. So according to Vedic philosophy, we are nowhere close to the end of the world. Some people claim. Next. Okay, let's talk the age of the universe. Brahma era is the Vedic era for the universal creation. That means from the time this whole cosmos or the whole universe was created, includes the planets or before biological creation, before human creation. This is what we mean by Brahma creation. And present, we are in 105.5 trillion years of that era. After that, we have the Kalpa or Srishti era. Now, this is when the biological creation started. And what we mean by biological creation, we mean like the trees, plants, and things of that nature, because you need those to support human life later on, because humans cannot appear just like that and live without food. So, Kalpa or Srishti era started uh, in 1,907 billion years ago. One thing to keep in mind, the chronology of ancient Indian history can only actually assert when the Yuga, Mahayuga, and Manvantara cycles are taken into account. Other systems are guesstimate, like Archbishop Usher. He said that it's like the universe was started at 9 a.m. on the 26th of February, 4004 BC. And most of you know that can't be correct. Next. Okay, now we're going to give you some evidence of where uh, of the Vedic system of creation. This is a fossil evidence of worms that were over a billion years old that were found in Madhya Pradesh. They were
this was a study done by Dr. Bowles and Dr. Schleiler. This this study was done in 2015. So one of the evidences of the Vedic system of calculation. This one is another evidence. This is from 2014. Some Australian astronomers found that the star ever uh, there was 13.6 billion years. So that was 2015, and I think the new observatory, James Webb Observatory, will find stars that are older than this. Next. Can I just go before before I go out of this? Let's go next one more back. Yeah. Just before I came to India, I came across another article. Some astronomers in Australia found a radio signal that's over 8 million years ago. So unfortunately, I didn't have time to include it in this presentation. But, we can share that if you need it. Next. Yes. Okay, so the Vedic system talks of Srishti and Pralay. We are in the Srishti cycle. It's a cycle. We are in the cycle, and the creation cycle is lasts for a certain time, and then we have the dissolution stage where everything um, it doesn't exist anymore. No humans, no planets, no nothing. That's part of the dissolution. That's when the universe is at rest. Okay, and this is an ongoing. Uh, Vedic philosophy tells us this is an ongoing cycle, but the only thing is it doesn't tell us how many times it has been going on. But all it says it's an ongoing process, creation and dissolution. Now, this is a visual that tells you about the movement of some of the planets. This small one is the moon orbiting the Earth. The blue one is orbiting the sun. And unfortunately, I didn't get to. There were two that I was supposed to add, where the sun orbits our galaxy, and the galaxy orbiting our super galactic. That's called the Panchmanda. Next. This is a Sankalpa Pata that's been used since time immemorial by the rishis to tell time. And as you can see, it tells us that we're in the second half of Suitar Kalpa. It tells us we're in seventh Mantar, and it also tells us the Kali Yuga that has gone by. Next. Now, this is our heritage
for those that accept the knowledge of the Vedas. It is our responsibility to preserve it by learning, teaching, and supporting its propagation. And I will give you a quote from Pandit Gurudat Vidyarthi. Astronomy is one of the sciences that is necessary to obtain the true meaning of the Vedas. Some other famous Rishi Dayanand. It was known to the Indians that the earth was round and that the earth, sun, moon, and stars were in motion. There was another famous quote from Emily Conrad. They were very advanced Hindu astronomers in 6000 BC. Vedas contain an account of the dimensions of the earth, sun, moon, planets, and galaxies. And lastly, Adolf Seelachar and P.K. Bose, who are scientists, 1 billion-year-old fossil prove life began in India. And these are the two gentlemen that did that study and found the life of worms in Madhya Pradesh that were uh, 1 billion years, over 1 billion years old. Next. These are some of the references for this presentation. Um, we draw a lot from Aryabhata and Brahmagupta and Bhaskar Acharya and all these other people and publications we have been. Next. And as I showed you, a lot of these are in this calendar. Some of the concepts of astronomy are listed at the front of this calendar, and then the calendar starts after that. And I'd like to thank you for being such a wonderful audience. And if you have any questions, please ask. And if I've confused you, please let me know. I hope some of the slides have been beneficial. And as I said, if you have any questions. Compare with the science. What the creation and the age of everything is. What says about scientists? Well, I gave you one example of Archbishop. He said 4004 BC was when this universe was created. But part of their problem is that they don't have a yoga system like ours. Okay? Anything before Christ is BCE. So it's a guesstimate. Whereas our time has been recorded either verbally or in the Puranas or other literature. Okay, our time is precise. So, for example, yeah, but what Trita? Yeah, yeah, yeah. 24 Tritayu. So it's 18. Ramayana was 18.2 million years old. And it states it right in Valmiki Ramayana that this is when this story happened. So we can calculate how far back that period was.
Same with Mahabharata, we can do it precisely. Same with other things, we can do it precisely. But the other systems, they don't have that. So it's hard to. They're just guessing. I hope I answered your question, Acharya ji. Astronauts not accepting these things. It will take time. I think NASA is doing a lot of with some of this, and in time you will see them accepting. So. Thank you. अभी हेलो, बड़ा अच्छा भी चर्चा चल रही थी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, कैलेंडर की। आवाज बंद हो गई? ओके ओके। तो इससे जुड़ी हुई मैं एक बात सुनाता हूँ, एक कहानी। सच्चाई है उसमें। महाभारत का युद्ध हुआ था और कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना। तो उसमें कहते हैं कि अभिमन्यु को ज्ञान था चक्रव्यूह में कैसे जाया जाए, लेकिन उसको बाहर निकलना नहीं था। और जब वो अंतिम उसमें चले गए तो वहां साथ में बच्चों ने उसको घेर कर मार दिया। और अर्जुन को जैसे कि पता चला तो उसको जयद्रथ ने रोका बचाने के लिए। जयद्रथ की वजह से कहते हैं अभिमन्यु की हत्या हुई। अगर जयद्रथ अर्जुन को नहीं रोकता तो अर्जुन अभिमन्यु को बचा लेता। तो शाम को जब आए वापस से तो पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, पुत्र मर गया। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन शाम होने तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं समाधि ले, मैं खुद चिता बनाकर आत्महत्या। तो दुर्योधन तक ये खबर पहुंची तो बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा कि वाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हमारा जो परम शत्रु है उसने खुद ही मरने की ठान ली है और कैसे भी करके हमें जयद्रथ को बचाना है युद्ध में, कि जयद्रथ को नहीं मरना। तो ऐसी व्यूहरचना की गई कि जयद्रथ को बिल्कुल सीमा की आखिरी, सेना के बिल्कुल आखिरी में उसको रखा गया कि वहां तक अर्जुन पहुंच ही ना पाए। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन था जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उसको कौन, तो पहुंच गए। शाम होते होते वहां पर जयद्रथ के पास पहुंच गए अर्जुन, और लगभग सूर्यास्त होने को ही था। तो एकदम ऐसा हुआ कि जयद्रथ हाथी था, लड़ाई चल रही थी, जयद्रथ एकदम देखा कि अंधेरा था, सूर्यास्त हो गया, लगा तो अर्जुन निराश हुआ। तो लगा कि भाई अब तो समाधि लेनी पड़ेगी। लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, ये सूर्य ग्रहण लगा है और तेरा दुश्मन तेरे सामने है। जयद्रथ भी कुछ हो गया कि मेरी जान बची तो बाहर आ गया, तेरा सिर, तेरा जो दुश्मन है तेरे सामने खड़ा है, इसको मार, इसको ऐसे मार, इसको वरदान है कि जो भी इसका सिर धरती पे गिराएगा उसको 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको ऐसे मारना है कि इसका धरती, इसका सिर जो है इसके फादर दूरी पर तपस्या कर रहे हैं वहां उसकी गोद में जाकर। अभी सूर्यास्त नहीं। तो अर्जुन ने ऐसे ही किया और अपने सिर से, अपने बाण से उसका सिर अलग कर दिया और उसका सिर लगा के वहां पर। ये कथा मैंने क्यों सुनाई, क्यों आपको मेरे को याद आई, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया तो कैलकुलेशन की गई कि कब कुरुक्षेत्र के अंदर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था, और वैदिक एस्ट्रोनॉमी से, वैदिक कैलेंडर से ये कैलकुलेशन की गई। जैसे कि सर ने बताया 126 साल हो चुके हैं कलयुग को, हालांकि परीक्षित के बाद से शुरू हुआ था। तो वो घटना लगभग आज से 5000 जो महाभारत का काल था उस दौरान की है। ये हमारे वैदिक कैलेंडर की इंपॉर्टेंस है। वो कैलकुलेट किया गया, जहां कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था वहां पे पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय मिला। तो इस तरीके से जयद्रथ की, तो ये हमारी इस वजह से इम्पोर्टेंस है भारतीय कैलेंडर की।
तो मैं डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य को आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए और हिंदी में बताएंगे। ये देखिए, हमारी हमारी कालगणना की यही विशेषता थी कि हमने उसको भागों में बांट दिया। कहीं युग सिस्टम है, कहीं मनवंतर सिस्टम है, कहीं कल्प सिस्टम है। मान लीजिए अब जो अंग्रेजी कालगणना है, तो सीधे सीधे है 2022, 23, 24 आप ये गिनती करेंगे। मान लीजिए अब आप लिखते हैं कि 9, 11, 23। अब ये आगे लोग आएंगे, वे कौन सा 23, 1823, 1923, 2123, 22, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे यहाँ तो सिस्टम था। अब राम कब पैदा हुए? 24वें त्रेता युग। आज क्या है? 28वां कलयुग। मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। उस ढंग से आप करोड़ों वर्ष पीछे और आगे घूम सकते हैं। और हमने दिन के बाद वर्ष में युग भी 5 वर्ष का युग। जब सूर्य और चंद्रमा एक जगह पे आते हैं, 5 वर्ष में आते हैं, तो 5 वर्ष का युग। 12 वर्ष का युग। जब बृहस्पति पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाता है, 12 साल होते हैं, तभी कुंभ का मेला मनाया जाता है। कुंभ राशि में आएगा, 2 बार घूम के आएगा, तो कुंभ का मेला मनाएंगे। फिर 60 वर्ष का युग। बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य एक जगह आ जाएंगे, घूमते हुए एक बिंदु पे, तो वो 60 वर्ष में आएंगे। उसके बाद 4,32,000, मतलब 43,20,000 वर्ष में सातों ग्रह तो पृथ्वी के चारों, न सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक स्थान पर आ जाते हैं। फिर उसको हमने कली माने 1, द्वापर माने 2, त्रेता माने 3 और सतयुग माने 4, उसको 1, 2, 3, 4 के प्रोपोर्शन में बांट दिया। 1/4,32,000, 2/4,32,000, 3 और ऐसे 4 करके हमने कलयुग, सत्य, त्रेता बना दिए। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जब हमारा सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है, तो उसको एक मनवंतर बोलते हैं, 30 करोड़ वर्ष के बराबर है। जब हमारी आकाश गंगा एक स्वयंभू मंडल है, सुपर गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाती है, तो उसको एक कल्प बोलते हैं। मतलब सारे ग्रह नक्षत्रों की गति के आधार पे हमने समय का निर्धारण किया। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है 1600 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से अपने एक्सिस पे, उसको एक दिन कहा। पृथ्वी 1,00,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से सूर्य के चारों ओर घूमती है, अब उसको 1 वर्ष कहा। तो ये सारी घटना जो है एकदम साइंटिफिक है और किसी भी चीज की गिनती की जा सकती है। जैसे कि आचार्य जी ने कहा, आधुनिक विज्ञान क्या मानता है? पृथ्वी की जो जन्म है वो 4 अरब साल पहले हुआ, सूर्य की उत्पत्ति 12 अरब साल पहले हुई, और जो जिसको बिग बैंग बोलते हैं, बिग बैंग का जो विस्फोट है वो 12 अरब साल पहले हुआ। परंतु हमारे यहाँ तो पूरा जो क्रिएशन साइकिल है 311 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब 31 शंख वर्ष के बराबर है। मतलब पूरे ब्रह्मांड की जो आयु, हमारा जो सौरमंडल है उसकी आयु 6 अरब वर्ष है, परंतु पूरे ब्रह्मांड में तो लाखों, करोड़ों, अरबों, मिलियन, बिलियन सौरमंडल है। उन सबकी मिला के आयु 31 शंख वर्ष है, तो वो 31 बिलियन ईयर्स कहते हैं। अभी तक जो आधुनिक विज्ञान है वह तो 12 बिलियन ईयर साल से पहले नहीं पहुंचा, क्योंकि विस्फोट, बिग बैंग ही 12 बिलियन पहले हुआ, तो उससे पहले सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो अब ये जो अश्विनी जी ने जो दिखाया है, नई रिसर्चेस आई है, और ये एक ऐसा स्टार भी मिला है जो कि करीब 13 बिलियन वर्ष पुराना है। इट मीन्स बिग बैंग तो 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ नहीं, बिग बैंग तो उससे भी पीछे हुआ होगा उनके अनुसार। तो हमारी जो गणनाएं हैं उसमें बहुत बड़ा एक्यूरेसी का स्पेस है। परंतु जो आधुनिक विज्ञान है वह कभी कुछ बोलता है, फिर पीछे सरक जाता है, फिर पीछे, मतलब वो नजदीक से दूर दूर जा रहा है। परंतु हमारे ऋषियों ने जो कहा है, आधुनिक विज्ञान अंततः वहीं पर जाकर समाप्त होगा, उससे तो पीछे बढ़ने की कोई बड़ी सीमा नहीं है। आधुनिक विज्ञान में तो रोज चेक होते हैं, रोज नया अनुसंधान आता है, थियरी बदल जाती है। आज किसी ने कुछ सोचा है, कल किसी ने कुछ कहा। अब पूरे भारतवर्ष में ही 1 बिलियन साल पहले मनुष्य कोई जीवन का संकेत है, और हमारी कालगणना क्या कहती है? 1.9 बिलियन वर्ष पहले यहाँ पर जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। तो जो हमारे ऋषियों की गणना है वो शाश्वत है। जितना भी विज्ञान पीछे बढ़ेगा या आगे जाएगा, वो अंत में
अंत में जाके इसी गणना पे रुकना है। परंतु आधुनिक विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपना कैलकुलेशन करते हैं और पीछे पीछे बढ़ते रहते हैं। अभी कहते हैं कि भी वहां पर जीवन था, बहुत सी चीजें मैं आपको और बताऊं, सुप्रेस कर दिया गया, ऐसे रिसर्च है उनको दबा लिया गया है, वो भारत के विज्ञान से मेल खाती है। एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, उसने एक पुस्तक लिखी फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। वह कहता है कि फॉरबिडन आर्कियोलॉजी ऐसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस मिले हैं इस पृथ्वी पर जिनको पश्चिम के वैज्ञानिकों ने दबा लिया है। यदि हम उनको बताते हैं तो उनका सारा जो सिस्टम है भारतीय कालक्रम के साथ मिल जाता है। अब आप अश्विनी भाई ने बताया कि 24वें त्रेता युग में राम पैदा हुए, तो वो समय करीब 1,80,00,000 साल पहले का है। अब इसका प्रूफ क्या है, आप कहिए कि इसका क्या प्रूफ है? एक प्रूफ है रामायण के अंदर, जब हनुमान जाते हैं लंका में, तो रावण का जो महल है, हनुमान कहता है 4 दांत वाला हाथी खड़ा, चतुर्दंती, इस श्लोक का 3-4 बार प्रयोग हुआ है। तो अभी तो 2 दांत वाला हाथी है, तो कभी दुनिया में 4 दांत वाला हाथी भी रहा होगा। तो एक एनसाइक्लोपीडिया एन कार्टा है, आप उसको गूगल पे भी देख सकते हैं, और वो कहता है कि इस दुनिया के अंदर कभी 4 दांत वाला हाथी भी रहा, और वो कहता है कि 4 दांत वाला हाथी इस दुनिया में 1,50,00,000 साल पहले तक था। 1,50,00,000 साल पहले उस हाथी का वो समाप्त हो गया और 2 दांत वाले हाथी चले। अब आप देखिए, हमारी गणना के अनुसार 24वां त्रेता युग जो है वो 1,80,00,000 साल पहले है, और 1,50,00,000 साल पहले तक 4 दांत वाला हाथी था। तो रामायण में ये जो उल्लेख है 4 दांत वाले हाथी का, ये बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है एनसाइक्लोपीडिया एन कार्टा के अनुसार उससे मिलता है। तो ये जो सारा सिस्टम है, उसपे जितना अभी नए अनुसंधान हो रहे हैं, पूरा जो वैज्ञानिक है, पश्चिम का भी जो विज्ञान है, वो भारत की ओर जा रहा है। जैसे आचार्य जी ने कहा, वो मानते नहीं है, वो ठीक बात है, क्योंकि उनकी अपना एक कैलकुलेशन का सिस्टम है, वो उसके अनुसार मानते हैं। पर जब कैलकुलेशन सिस्टम उनको पीछे ले जाता है, तो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। उनको अभी जो प्राचीन जो आधुनिक विज्ञान है, वो अपनी शैशवावस्था में है, वो अपनी अंतिम परिणति में नहीं है। तो जब वो परिणति में पहुंचेगा, तो अवश्य ही भारतीय विज्ञान से उसका मेल होगा। अभी एक और बड़ी विडंबना है, सब लोग कहते थे आधुनिक विज्ञान ने इतनी तरक्की कर दी। मैं आपको सिंपली बताऊं, आधुनिक विज्ञान ने कोई तरक्की नहीं की। तरक्की क्या हुई है? तकनीकी में। आधुनिक तकनीकी का विकास हुआ है, आधुनिक विज्ञान का विकास नहीं हुआ। अगर आधुनिक विज्ञान तरक्की करता, तो आप देखते हैं कितना पोल्यूशन फैल रहे। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते, अगर आपको विज्ञान का आभास होता, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी न बनाते जिससे पोल्यूशन फैलता, जो इको फ्रेंडली न हो, जिससे हमारी ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता। तो आधुनिक विज्ञान, हम चीज बनाते हैं और बाद में देखते हो इसका तो दुष्प्रभाव हो रहा है, फिर कहते इसको रोकिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अर्थ समिट चल रहा है, पृथ्वी को बचाओ। तो आगे जो विज्ञान पृथ्वी को नष्ट करने में लगा हो, वहां विज्ञान क्यों नहीं है? तकनीकी बढ़ी है, परंतु तकनीकी में जो विज्ञान होना चाहिए उसकी चेतना नहीं है। हमारे यहाँ ज्ञान था, विज्ञान था, हमारी चेतना वैज्ञानिक थी। हमारे ऋषियों ने उतना ही तकनीकी को विकसित किया जितनी आवश्यकता थी, अधिक नहीं, क्योंकि उस समय कमर्शियलाइजेशन नहीं था, कंज्यूमरिज्म नहीं था, तो सब कुछ हम पैसे पे तकनीकी बेच सके इस प्रकार का आधार नहीं था। वहां पर आध्यात्मिकता का आधार था और यहाँ पर भौतिकवाद का आधार है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसी के साथ हमारा एक अगला कार्यक्रम हम करेंगे। हमारे एक मित्र बैठे हैं, जीनोम साइंस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और ये कहते हैं जेनेटिक रिफॉर्म करके किसी भी बच्चे को राष्ट्रभक्ति बनाया जा सकता है, देशभक्त भी बनाया सकता है। उसके जीनोम्स में, उसके जीन्स में मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है। तो मैं अपने मित्र प्रोफेसर सुरेश चिक्कारा जी को, ये जाट कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा इनका चिंतन है, तो संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। तो किस
प्रकार से जेनेटिक साइंस के आधार पर, वेदों के आधार पर हम उस पे काम कर सकते हैं। इनका वो ये हाँ, ये तो फिर यहाँ ये आपका लगा ना क्या? अच्छा, ना ये आपका फिर यहाँ चार फीट होता है। यार इसमें है क्या ऐसा? होगा देखो डाल ना ना बड़ा है। ये बड़ा नहीं सुना। हाँ पकड़े क्या? कर लो जैसे कहना पड़ेगा आपको, जैसे बोलते रहो अपना ही आगे ऐसे बोल दो, इसमें इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इसको मैं बढ़ाता तो आप उसको यहाँ से देखते रहो ना, देखो यहाँ हाँ, मैं चेक कर रहा था। तीन लोक नो खंड में गुरु से प्रणाम होवे, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होवे। इस तरह से एक लोग का गुरु गुरु द्रोणाचार्य था, इस तरह से मेरा गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ओकेजन माता शोभा